मार्केट लीडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ हैं बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर बालासुब्रमण्यम। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात बाजार की। बाजार में आप देख रहे हैं काफ़ी तकलीफ है, बाजार काफ़ी नीचे आ चुका है और इतना बड़ा करेक्शन जो हुआ है बाजार में, क्या लग रहा है अभी भी पेन बचा है, अभी और करेक्शन होगा? क्या निफ्टी 5000 के नीचे दिखता है आपको या कुछ स्टेबिलिटी आएगी बाजार में? ये जो पूरा जो फॉल जो आया हुआ मार्केट में, मेनली ऑन करेंसी मार्केट एज वेल एज ऑन डेट मार्केट, ये यूएस यील्ड have been going up. It has been rising actually for quite some time. So that's also in some sense putting some kind of question mark that recovery in US market to what extent could have an impact on emerging market, the bond market. So there has been some bit of question mark. See, in these kind of scenarios, when too many question marks are there, the volatility in the market is now becoming in some sense reality. लेकिन कितना बड़ा कंसर्न है? आपने यूएस बॉन्ड यील्ड की बात की। अगर हम देखें यूएस बॉन्ड यील्ड 2.8% के ऊपर चले गए हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को, लोग इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारत में बॉन्ड यील्ड करीब 9% के स्तर पर पहुंच गई है। करेक्ट। इसका क्या मतलब है? क्या और पैसा निकलेगा अभी भारत से, या आपको लगता है कि फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लगेगा उस पर? आई थिंक द वे आई एम लुकिंग एट इट, we'll probably not see too much of money moving out of the country for one simple reason, that whatever that has come from overseas investors, it's only some small portion of their global investment book has come to India. So that's one. Second is most of the money has come from the long-term investors, and this time around the last 3 weeks of the entire market volatility, FI's selling has been only to the extent of about less than $3 billion. It's not very big, so which itself shows that we'll probably see lesser pressure coming from foreign investors selling in Indian market. As you rightly said, the bond market has gone up significantly, which is opening up the gate actually for foreign investors to look at Indian bond market because the levels are very high. And today, Government of India bonds are trading in excess of about 9%, almost about close to 9%. So sovereign bond with zero risk, for them it become could potentially be attractive. So I think जो volatility जो है उसका वजह से the general concerns which has got built up. So मेरे हिसाब से I think it's a temporary, and I think any single move coming from Reserve Bank of India for reversal of some of the earlier measures, I think could bring back the sentiment back. लेकिन आपने सही कहा कि इक्विटी से शायद एफआई ने इतना पैसा नहीं निकाला, 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर निकाला है। Correct. लेकिन अगर आप डेट से देखेंगे वो 17, 18, 20 बिलियन डॉलर निकल चुका है। क्या वो कंसर्न है कि डेट से पैसा निकल रहा है ज़्यादा? नहीं, डेट में जो आया हुआ वो पैसा निकल गया। जो टोटल आया हुआ इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इज क्लोज टू अबाउट $20 बिलियन। जो उतना आया उतना निकल गया एक्चुअली। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, द इंडियन बॉन्ड मार्केट इज फार मोर लिक्विड, एंड जो पैसा निकला एफआई से आज नहीं निकला, एक्चुअली 3 weeks बैक इट मूव्ड आउट, एंड 3 weeks बैक $15 billion मूविंग आउट ऑफ द कंट्री is actually is pretty large amount, large sum actually, and that also goes to show that the Indian bond market in India is far more deeper, which they are not giving the similar kind of experience in some of the other markets. So वो basis में देखिएगा तो I think that definitely the money that has moved out, I think that could potentially come in. लेकिन जिस तरह से रुपया कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, अब कई लोग बात करने लगे 65 रुपए की, 65 या उससे भी आगे कुछ लोग जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 70 रुपए भी हो सकता है। करेक्ट। तो ये कितना बड़ा रिस्क है इंडियन मार्केट्स के लिए, और क्या आपको लगता है कि कहीं पर स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि आरबीआई कोशिश करता है, कई बार आपने देखा था 60 के लेवल पे कोशिश किया, 59 तक आया, फिर वीक हो गया। करेक्ट। क्या आरबीआई सचमुच कुछ कर सकता है? कितना बड़ा रिस्क है ये इंडियन मार्केट के लिए? I think, frankly, we have not been getting it right. And at any point of time, the last few years, the biases towards rupee has always been more towards appreciation. And आप किसको भी पूछा होगा लास्ट 2-3 साल से, सब लोग बोला होगा अगर 52 रुपये हो जाएगा, 53 होएगा, 55 होएगा, 58 में स्टेबलाइज होएगा. Even we as a fund house have been actually making a case actually for rupee to stabilize. And we also run some of our offshore funds. And our house views, we have always been projecting that
rupee will always stabilize between 57 to 58 or 56 to 58. On expectation, current account deficit will come down. It does impact the import. It does impact on oil import. It of course is positively benefit the Indian companies who are largely dependent on overseas and exports market. And also it does impact the huge amount of loan repayment that could come for the Indian companies to overseas investors. Any unhedged kind of portfolios could potentially impact their repayment value. The repayment value has gone up. So I think this adjustment factor, which I generally call it an adjustment factor, we are at this transformation stage. These are some of the adjustment factors which now has started happening everywhere. It's happening in currency, it's happening in bond market, it's happening in the shorter markets. It's everywhere there's been an adjustment factor. So only the issue which has been the move has been so shift and it has happened in such a short time. It actually has taken a bit of confidence, at least in the near term. तो ये बताइए कि फिर कितना डाउनसाइड है अभी इंडियन मार्केट्स में यहाँ से कितना आपको लगता है और गिरावट आ सकती है? I think the fall has been quite sharp, and which again is coming largely from large cap companies. It's not coming from mid cap companies. अब मिड कैप का जो फॉल पहले जो आया हुआ और लार्ज कैप का फॉल अभी जो आ रहा है, आप दोनों कंबाइन करके देखिएगा तो आई थिंक इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अ सब्सटेंशियली लोअर लेवल दैन टू 5200. सो आज को जो करेक्शन जो आ रहा है इन द लार्ज कैप इज अगेन यू आर लुक एट इट फ्रॉम द अदर एंगल ऑफ विच इज सेगमेंट ऑफ द मार्केट इज फॉलिंग. The significant fall in the index component is coming from the banking and financial service sectors. Thanks to, of course, the interest rate movements, currency volatility, and the global yields going up, and the rate of interest going up actually for borrowers. All those things now is putting some pressure on the banking and financial sectors. So उसका वजह से आपको पूरा index बहुत नीचे आ गया because the banking and financial service index has got 26% weightages in the stocks. The basket has got 26% weightages almost in the Nifty, and any move of reversal and good monsoon which you are currently seeing, the impact of that would be felt in the second half in terms of improving the contribution to the overall GDP from agriculture, increased income in the hands of farming community could potentially have a positive impact on rural economy spending. These are some of the things which I think hopefully should help the market to revive. And finally, the current volatility also how to make the policymakers to look at some of the things very seriously and come with some policies as we did in 91-92 that take some of the policies on tough stance on certain areas, which I think probably I keep my fingers crossed and remain hopeful that they will do something. तो क्या आप कह रहे हैं कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है इतने करेक्शन के बाद बाजार थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं? I think market to stabilize one eye actually. The way I think the last 2 days I am seeing it as a excess damage is happening. Excess damage is happening. Whether you take in the bond market, I think up to certain levels you can always accept. Yes, this volatility is bound to be there, and beyond an extent, it's always something which is not needed or which is not desired. It happens. And today if you look at bond market mein to already ho chuka actually. Bond market mein I think levels are not seen in the last 5 years. Yes. The last 5 years the 10-year bond deals the average around 7.8%. आज के दिन में 10-year bond deals now has gone above close to 9%. So if you look at that, I think I would call it as an excess which that is happening. Whenever the excess happens on either side, some bit of moderation has to happen. हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, ये खास बातचीत जारी रखेंगे. आप देख रहे हैं मार्केट लीडर और हमारे साथ हैं खास मेहमान बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर बालासुब्रमण्यम. आपसे एक सवाल इंटरनेशनल मार्केट पे लेना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में थोड़ा सा डेटा अच्छा आ रहा है. हाउसिंग स्टार्ट ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ले लीजिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यूएस मार्केट हाई बनाते रहें, नए रिकॉर्ड हाई लाइफ हाइस पे चलते रहें और इमर्जिंग मार्केट्स भारत अंडर परफॉर्म करे, लाइफ लोस पे चले, जैसा थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लगता है फिलहाल? क्या आपको ये लग रहा है जो डिस्कनेक्शन है ये खत्म होगा, कहीं ना कहीं इंडिया भी वापस
फिर से मजबूती दिखाएगा? क्या लगता है क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा बेहतर होगा, क्या वो पॉसिबिलिटी है? वी हैव टू लुक एट फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, 1-2-3 साल में किधर जा सकता है एक्चुअली. So if you look at this year, we have a lot of variables for which we do not know an answer. So one is the current volatility, and second is the slowdown in the economic growth, when that will reverse, and third is the government taking a lot of policy making initiatives to ensure that the long term growth is made sustainable. So I am looking at it, we are at a stage of some bit of structural change, and as an economy we are under structural change, as a bureaucracy we are in a structural change, as an administrations we are in a structural change, and all these structural changes I think eventually have to pay off in the next few years. The way I am looking at it, I think post the election results we will not of course see actually how that outcome is going to be. Probably we will probably see much more action towards building up the growth back to normal. Could become the single-minded focus actually for any new government that comes in, because most of the policy initiatives in the last 18 months in some form or other has already been happening. So policy reforms have been happening, administrative reforms have been happening. Maybe it's all coming at a stage where we need to fight with the multiple things at the same time. लेकिन इज इट इनफ जो सरकार कर रही है? क्या आपको लगता है वो बाजार उससे खुश है जो कदम उठा रही है? चाहे वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पेंशन फंड्स को लेके आना चाहते हैं, हम दूसरे स्टेप्स उठाना चाहते हैं, इज इट इनफ? क्योंकि या आपको लगता है कि क्योंकि इलेक्शंस हैं तो बाजार को लग रहा है कि नहीं, पहले वो हैंगओवर निकल जाए फिर एक कॉल लिया जाए, तो साइड पे काफी लोग बैठे हुए हैं, पैसा लेके डाल नहीं रहे, क्या हो रहा है? आई थिंक उसमें आप ऐसे देखना चाहिए, जो पेंशन रिफॉर्म्स जो अभी चल रहा है, FDI इन्वेस्टमेंट इन पेंशन ऑन विच लॉट ऑफ डिस्कशन हैज बीन गोइंग अराउंड, इंश्योरेंस सेक्टर्स, आप कोई भी आप हिसाब से देखेंगे तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट लुक वेरी ग्लूमी. कोई भी बोल सकता है एक्चुअली आज के दिन में कौन पैसा डालेगा टाइप्स. बट थिंग इज अलाउड टू लुक एट इट फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट बीइंग डन टू गेट शॉर्ट टर्म फ्लोज, or is it being done actually to get money tomorrow, or is it being done actually to get the economy to such a level that I know for sure that if I move to India, then as a foreign investors, yes, these are some of the things which I'll build actually the business over a longer period of time. आप उसके हिसाब से देखेंगे तो that current investment, rather FDI moves on various sectors or in the direction of building up the long-term structural change. The impact आज के दिन में मालूम नहीं पड़ेगा, इसका impact मालूम पड़ेगा डाउन द लाइन 2-3 years. लेकिन कहीं पर भी पैनिक होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है. अब इस समय कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको बाजार में दिखती है? कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सेलिंग हो चुकी है, अब वैल्यूएशन ठीक है, लेना चाहिए? The real valuation comfort is coming actually into the interest rate cyclical sectors. So but the question is उसमें इतना volatility जो है, so people generally have the tendency to get a little bit get frightened of looking at the volatility. But otherwise आपका valuation के हिसाब से देखेंगे and you have a conviction that this matching next 3-4 years, a lot of things could happen, especially towards getting back on growth about 6-6.5%. Well, that's the sector which could potentially be a money earner for investors. तो जब आप इंटरेस्ट सेंसिटिव कहते हैं तो उसमें बैंक्स आ जाता है, ऑटो आ जाता है, रियल एस्टेट आ जाता है. इन तीनों में कहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है? I think banking industries is one cannot ignore beyond a point, because banking industry is actually we call them actually proxy to the economy. So जो economy जो मंदी रहता है तभी उनका भी सेक्टर का मंदी चलते हैं. तो इकोनॉमी थोड़ा तेजी आ जाते हैं तभी वो बैंकिंग सेक्टर का तेजी आ जाते हैं. ऑटो, सो ऑटो इज अनदर वन. से ऑटो अभी आपका कंज्यूमर्स द बिहेवियर जो है, सर यू कैन नॉट चेंज एट द एंड ऑफ द डे, एंड द लग्जरी इज राइजिंग एक्चुअली across the country. There is a now current perception that कितना दिन तक rural economy also will start driving the growth consumption growth. अगर good monsoon, good produce on agriculture, and one more year of good monsoon will make actually the rural economy should do far better actually. So उसके हिसाब से देखेंगे तो auto and automobile sectors, and within that one has to choose whether it is four-wheeler, whether it is two-wheeler. I think our view is two-wheeler, at least in the near term, will do much better than the four-wheelers. And within the four-wheelers,
we are more inclined towards car companies, and also it's in the companies which are largely going to benefit out of the agriculture growth, mainly on farming activities, which is the companies that are largely into the tractor segment. समय एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, हम बातचीत जारी रखेंगे बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर बालासुब्रमण्यम से। वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे हैं खास मेहमान बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर बालासुब्रमण्यम से। इस समय म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है? क्या लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं? क्या वो पैसा निकालने की सोच रहे हैं? क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड में समय? See, mutual fund, I think I am seeing two different type of trend. जो last 3 साल से lot of money that was not lot of money, the money that was flowing in into equity, they were flowing into certain segment of the market who are delivering better performance. So आज के दिन में the incremental money is not coming, but money is moving from one hand to the other hand who are performing better. So that's one trend which I'm seeing. But otherwise, normally it actually remains more or less flat. But equity में अभी जो पैसा आना शुरू हुआ था, जून में I think we saw good inflows, almost about 900 crores का inflow आया था mutual funds, all सब मिला के 900 crore का inflow आया था, which is my view is a good trend. I am also seeing actually that equity asset class is now gaining some attraction. दूसरा तरफ में देखिएगा तो the experience fixed income, a lot of money has come into the last few years, especially last 2 years. Big money has come into the duration based funds, whether it is short term fund, dynamic bond fund or income fund. Across the industry, the good amount of flows that has come. So उसमें at this point of time, because of market volatility, investors को रिटर्न जो आ रहा था जून तक बढ़िया रिटर्न आ रहा था जून तक का, जून के बाद बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी एक तरफ से एक बढ़िया रिटर्न जो था वो एक्चुअली नीचे आ गया, और सेकंड नाउ वी आर सीइंग सम बिट ऑफ नेगेटिव रिटर्न. बट उसका वजह से आई एम नॉट सीइंग एक्चुअली द रिडम्पशंस कमिंग इन. आई थिंक पीपल आर विलिंग टू वेट, and we also been telling people that better to wait, because fixed income, the advantage is always there. Unlike an equity, fixed income you always have one side interest component which gets accrued on a daily basis. The mark to market fluctuations makes your NAV fluctuate. But एक बार आपको stability आ गया actually bond market में, then your portfolio will become much more stable. So आज के दिन में the way we are seeing is a good time to build fixed income asset class, because fixed income always make money only when the rates are high, and you make more money actually when the rates are high. Not that you don't make money actually when the rates are low. When the rates are high, you make big money actually. So आज के दिन में देखिएगा तो I think from the interest rate where they are, from the savers point of view, it makes all the more sense to come into the fixed income schemes of mutual fund. लेकिन कैश लेवल्स इस समय कितने हैं इंडस्ट्री में? काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड हैं या कुछ कैश लेवल्स भी हैं? कैश लेवल्स तो ऑफ कोर्स चेंज होते रहते हैं एक्चुअली. कैश लेवल्स आज के दिन में फॉर सम ऑफ आवर फंड्स वी हैव क्लोज टू अबाउट 5 to 6%. एंड कोई भी आप किसका भी देखेंगे तो इवन आवर ओन स्कीम्स, आई कैन नॉट टॉक टू मच अबाउट द इंडस्ट्री, बट इक्विटी स्कीम्स इन जनरल we don't go beyond 8 to 9% cash. In the worst case scenario, we go up to 9% cash. In a best kind of market, we keep about 2-3% cash. But आज के दिन में I think redemption pressures on equity में उतना है ही नहीं actually. I think हमारे हिसाब से जो market जितना गिरा हुआ, I would assume that equity में पैसा आना शुरू हो जाएगा, for the reason that any asset class which I buy today are almost at the same level. I cannot say this is better, this is better, this is better. So almost everybody is the same level, and equity also fortunately is doing, on a relative terms, is doing better. फाइनली इन्वेस्टर को अगर पोर्टफोलियो बनाना है, अब कितना इक्विटी में रखे, कितना गोल्ड में रखे, कितना फिक्स इनकम में रखे? I think one depends upon what is the age profile of investors. Second is what is the risk appetite. When I mean risk is how much is the money I'm willing to lose. I mean investment is always made better only if you know actually that I'm willing to lose that money. So that also one should know at all point of time how to allocate the money. So वो basis में आप देखेंगे तो I think I'm quite bullish on equity for next 2-3 years. I think the interest rates are high today. I think once this interest rate starts coming down,
economy is at 4.5%. Once you start picking up, I think when the new government comes on board, we'll also see some revival of activities around the infrastructure, manufacturing. So उसके हिसाब से देखेंगे, I think our view is, I think equity for next 2-3 years, I think should do much better. See, in that context, if you look at it, I think fixed income I'll keep roughly about 50 to 50% almost. So I'll keep roughly about 35% in equity, and roughly about 15% I'll put in gold. And gold as an asset class, one cannot ignore it for the reason that you always have some utility value for that. So there is a storage value, which is of course none, and there is also utility value because every household today has got somebody other getting married. So you do have a requirement of gold for the purpose of some bit of utility value. So अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो better to also have some allocation towards gold ranging from 10 to 15%. On that note, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए. Thank you. My pleasure.